Good morning, sir. Good morning. Uh, Today it's a great weather in Delhi. I don't know आपके आपके जगह पे कैसा है, लेकिन यहाँ पे तो बारिश हुई है. यहाँ पे तो it's windy and it's cold today. तो uh, खैर चलो let's start with the class. I hope we are clear till the topics जो कि हमने कल तक कवर करे थे. कोई डाउट तो नहीं किसी को? No, sir. हाँ. Okay. ठीक है, तो वी आर सपोज टू स्टार्ट विद द लोअर लिम्ब एनाटमी, तो नॉट द लोअर लिम्ब एनाटमी but the lower limb muscles, all the muscles and their nerve supply. Just the way we covered it in the upper limb, we are going to do the same thing in the lower limb. So we have divided it into two parts. Today we will be covering all like you can say up to I guess the thigh muscles, and after that the lower limb muscle and below the knee we will cover it tomorrow. ठीक है. Um, um, okay, we'll cover till here. We'll cover till the thigh region, and the leg muscles on the you can say the muscles below the knee. We will cover it tomorrow. Okay, so okay, we'll be talking about their attachments and their nerve supply, along with that their that thing, their nerve supply and their functions and all those things. Okay? So mm, ठीक है, let me start then. I think ज़्यादा लोगों ने अभी ज्वाइन नहीं किया, but I चलो कोई नहीं. Okay, so let's start with the gluteal region. Can I now it will be more of an interactive session, because till now we have discussed almost you can say more or less all the muscles. At least we have taken the names, na? Not if discussed, but if we have taken the names of these muscles. So first of all, the first muscle that we are supposed to talk about is the gluteus maximus. Okay, so let's forget the origin. But insertion के बारे में हमने बात करी थी ना. It was getting inserted on some part of the proximal part of the, Dear University. yeah, it was gluteal tuberosity. And we talked about the femur, that on the posterior part we have got two different lines. Now what is the one is the gluteal tuberosity. We are talking about the posterior aspect of femur, है ना. And here we saw that on the lateral side we have got a gluteal tuberosity, and there was another line on the medial side as well. एक लाइन थी ना. its name was based on a muscle that was pectineal line. यही था. it was pectineal line, है ना. ठीक है. it was Sir, pectineal. ठीक है, pectineal line on the medial side and the gluteal tuberosity on the lateral side. Okay, and eventually we saw in the mid one third of the shaft of femur on the posterior side, the line was called as, can anyone tell me? it was linear it was linea aspera, ना. It was linea aspera. ठीक है. And then on the lower one third of shaft of femur, it was, we saw that there were two lines, the lateral and the medial supracondylar line, and apart from that there were two borders as well. Likewise we talked about four borders and four surfaces on the proximal and the distal one third of the femur on the posterior side, and mid one third में हमने बात करी थी कि there are three borders and three surfaces. आई थिंक यही यही बात करते हैं ना, कि कुछ गलत तो नहीं बोल रहा मैं? ठीक है, यही है. ओके, तो ठीक है. ओके, so talking about the gluteus maximus, first of all we can see that it is the most superficial gluteal muscle that we can talk about. Apart from that, we have talked about the insertion of this muscle, that is on the gluteal tuberosity on the femur. Apart from that, we can see that okay, it is coming from, you can say, the inferior and the lateral and the inferior part of the sacrum. This is the sacrum, of course, है ना. So from the posterior lateral sacrum to the gluteal tuberosity of the femur. Okay, and the main function of this muscle should be of course the extension of the hip joint, right? It is supposed to provide extension. This thing we know. And the nerve supply that we are supposed to talk about, the thing that we must remember here is कि inferior gluteus, देखो, first of all the thing is that gluteus maximus is you can say the major gluteal muscle, and the you can say the gluteus minimus and the medius are not that major as compared to, like, तभी उसको हम sir, minimus and your medius कह voice रहे हैं. is breaking. It's breaking for everyone. Sir, there is some disturbance. There's some disturbance. Okay, just a second.
Is it better? Yeah, sir, fine. Okay. 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 ठीक है. So the thing is, the thing is that the gluteus maximus, it is the major muscle, but the nerve supply for gluteus maximus is inferior gluteal nerve. But when we talk about the gluteus medius and the gluteus minimus, here we can see the nerve supply is superior gluteal nerve. Here also we can see the nerve supply is superior gluteal nerve. So you can remember it in this way, that the major gluteal muscle has got the nerve supply that is inferior gluteal nerve, but the you can say the smaller gluteal muscles have the nerve supply that is superior gluteal nerve. तो ये इस तरह से मतलब ये उल्टा है nerve supply and muscle. So you can remember it in this particular way. I hope till now this thing is clear to everyone, that the nerve supply, the superior gluteal nerve, the name of the nerve is superior gluteal nerve, but it supplies the small gluteal muscles, that is the gluteus minimus and medius, and the inferior gluteal nerve, which is supplying the major gluteal muscle, that is the gluteus maximus. Okay. And of course we have talked about the function of the gluteus maximus, that is extension, and you can say a bit of lateral rotation as well. Of course it is present on the posterior side. तो जैसे हमने humerus में पढ़ा था ना कि all the muscles which are present on the posterior aspect of the humerus, of course they are supposed to provide lateral rotation of the humerus as well. Likewise here we can see it is present on the posterior aspect, it is supposed to provide lateral rotation of the hip joint as well. Lateral rotation of the hip means it is trying to rotate the femur laterally, na? Okay, so that is the gluteus maximus. Now coming up to the two small gluteal muscles, that is the gluteus medius and the gluteus minimus. The thing is that do you know about जैसे अगर हम इंजेक्शंस की बात करते हैं तो वी हैव गॉट इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन है ना, एंड इंट्रावीनस टाइप ऑफ इंजेक्शन है ना. तो इंट्रामस्कुलर के लिए, फॉर इंट्रामस्कुलर gluteus medius, you can say gluteus, it is the gluteus medius. Gluteus medius is one of the most commonly you can say used muscle for which you can go for the intramuscular injection. Apart from that we can use vastus medialis, नहीं vastus lateralis, you can use vastus lateralis as well. Vastus lateralis, apart from that gluteus medius also. So these are the two muscles which are most commonly. Apart from that deltoid is also used for intramuscular injections. Okay. So gluteus medius and gluteus minimus both having the nerve supply that is superior gluteal nerve. Okay. I think more or less. Can anyone tell me the attachment, like where on the ilium we have got the attachment of the gluteus medius and the gluteus minimus? Which surface of the ilium? We talked about three surfaces of the Posterior surface. कौन सा? It is gluteal surface ना? Gluteal surface. On the lateral side we have got the gluteal surface of ilium, I think हमने ये पढ़ा था ना. And on the medial side we have got iliac surface, and here we can see on the medial side we have got sacropelvic surface, and between the iliac and the sacropelvic surface we have got a line that was called as, किसी को याद है? Arcuate line. ऐसा मत करो यार, ये तो हमने डिस्कस किया है. Yes, sir. That is arcuate line or iliopubic eminence ना. That was arcuate line or iliopubic eminence, and on the posterior side, just posterior to the arcuate line, I am talking about the medial. Right now we are having a look at the lateral part of the ilium, but if we talk about the medial surface of the ilium, on that we talked about the the iliac surface, and on the posterior side we have got the sacropelvic surface, and these both surfaces are being divided by the arcuate line or the iliopubic eminence, iliopubic eminence. Okay, but on the lateral side we saw that we have got the gluteal surface on which we have got the gluteus medius and the gluteus minimus that is attached. Both of these muscles are having their distal attachment, you can say, on the greater trochanter. This is the lesser trochanter, this is the greater trochanter, so they have got their insertion, or you can say they have got their distal attachment on the greater trochanter, and the proximal attachment on the iliac, on the gluteal surface of the ilium. Now the thing is that I've talked about this in the Trendelenburg sign. Should I talk about it again? Trendelenburg sign में significance of gluteus medius, or should I move on? उस दिन सबको clear होगा? Okay. देखो, एक बार इसमें थोड़ा बहुत ऐसे डिस्कस कर लेते हैं. That I talked about this, that
that the origin and the insertion of the gluteus medius and the gluteus minimus can reciprocate each other, na? It can become opposite. You can say sometimes this can become the origin and this can even become the insertion. Can you even tell me ki in which circumstance that we can see that the origin will become the insertion and the insertion will become the origin? In weight bearing or in non weight bearing? किस पोजीशन में, इन वेट बेरिंग और इन नॉन वेट बेरिंग ग्लूटियस मीडियस का? In weight bearing है ना, in weight bearing, or precisely we can say in unilateral stance weight bearing ना. If we talk about the unilateral, if the person is in unilateral stance है ना, and the person is bearing weight on the right hip joint only, and the person has lifted the left leg, in that case of course, because of we took a reference of the photo frame ना, हमने photo frame का ऐसे कुछ reference लिया था, and we saw that if the, you can say if the person has lifted the left leg, in that case there is no support for the pelvis from this side, and because of that, because of the gravitational force, the pelvis is supposed to drop on this side around this hip joint है ना. And we called that अगर अगर ये pelvis है, if it is dropping on this side around the right hip joint, we can say that there is right hip joint adduction or abduction. Adduction. That is right hip joint adduction है ना. Okay, I guess सबको ये चीज़ clear हो गई है ना, because we can say that the pubic, let's take the pubic symphysis. The pubic symphysis is now coming towards the weight bearing unilateral stance weight bearing shaft of femur na. It means that is adduction, or on the contrary we can say if the leg is in non weight bearing, in that case the shaft of the femur is coming towards the pubic symphysis, and we call that also hip joint adduction. Though both we can call it as hip joint adduction. Okay. Okay, so it means this thing is clear to us that that the Trendelenburg sign, and it is majorly the function of the gluteus medius to keep the pelvis, and eventually our main motive should be keep the pelvis in the neutral position only. ठीक है, main motive ये होना चाहिए. pelvis अगर drop कर रहा है या फिर opposite उसका अगर hike कर रहा है, तो both are you can say abnormal conditions, or that is not the normal functioning of the pelvis. ठीक है, तो इसलिए we need to keep it in the neutral position. Okay, इसी से एक क्वेश्चन निकल के आता है, अभी तक हमने ये पढ़ा नहीं है, but let's see if anyone can answer that let's say if this person is first of all the thing is that कि हम अगर crutches, auxiliary crutch या फिर cane अगर किसी person को prescribe करते हैं, तो are we supposed to like in on which side are they supposed to use the cane, on the affected side or on the non-affected side? On the unaffected side. On the, yeah, exactly, on the non-affected. Let's say this person is having hip joint OA, right hip joint, this is the right side, this is the left side na. So let's say this person is having right side hip osteoarthritis or any pathological condition, let's say. Okay, and because of that it is painful, and then we like if we prescribe a cane to this person, so that the person bears weight on the cane and there is a less amount of compression on this particular hip joint, then we are supposed to prescribe this person to use the cane on the contralateral side to the affected hip joint. Okay, or you can say the affected side ke contralateral side where this person is supposed to use this thing, the cane. Why now there is a vast you can say a big explanation for this thing, that why this person should use cane on the contralateral side, and we will talk about this in biomechanics. We will talk about the mathematical deduction of this key, how how we can calculate this thing, the joint compression when the person is using cane. So we will talk about that in biomechanics, but right now here what we can see is that if the person uses this thing, a cane on the contralateral side, the person is using cane on this side है ना, so it means the person is bearing weight on the cane through the hand है ना. अब उसकी वजह से because of that we will see we have got a muscle that is latissimus dorsi है ना. Latissimus dorsi is attached on the ilium. I think ये हमें सबको clear है ना. Latissimus dorsi has its attachment on the thoracolumbar fascia, which is present here na, thoracolumbar fascia, and getting its insertion on the humerus. So we can see that if we bear weight on the cane पे अगर हम weight bear कर रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है, that we see that there is a contraction, or you can say there is an activation of the latissimus dorsi which is present here, and because of that
you can say the insertion of the latissimus dorsi becomes this particular point, and the origin becomes the its attachment on the humerus. Okay, because humerus पे latissimus dorsi is now stable, and on the ilium it is now functioning. Okay, so because of that the contraction of the latissimus dorsi, it tries to lift up this part of the ilium, or you can say this part of the pelvis. The contraction of the pelvis, the contraction of the latissimus dorsi will try to lift this particular section of the pelvis. I hope यहाँ तक हमें समझ आया. यहाँ तक सबको समझ आया दैट ये पर्सन जो है, दिस पर्सन इज हैविंग राइट हिप जॉइंट, पेनफुल राइट हिप जॉइंट बिकॉज ऑफ एनी पैथोलॉजिकल और एनी कंडीशन. एंड नाउ वट वी सी that we prescribe this person to use a cane on the side which is contralateral to the affected side. Why? Because our main objective should be that since the person is bearing weight on the cane right now, है ना, by using the hand को यूज़ करके अगर cane के ऊपर person weight bear कर रहा है, तो उस केस में there is an activation of the latissimus dorsi of left side. And in this case, of course, we can see ki or the its attachment on the humerus is now stable, and its attachment on the, you can say it is providing, the latissimus dorsi is supposed to show its action on its attachment with the ilium. Okay, and because of that, and because of the contraction of the latissimus dorsi, it will try to lift the ilium upwards, or you can say I can make an arrow in this particular direction. Okay, upward direction. अब उससे क्या होगा? Of course, when the person is in unilateral stance on the right hip joint, and because of gravity, you can say because of gravity, the pelvis was supposed to drop on the left side. Now it was the contraction of this particular muscle, na, which was trying to bring the pelvis into neutral position. But what we can see that the contraction of this muscle will increase the amount of compression on this particular hip joint. ये सबको समझ आया कि नहीं? Yes, sir. ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ दैट इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द अमाउंट ऑफ कंप्रेशन ऑन द पर्टिकुलर जॉइंट, ये क्वेश्चन आ सकता है कहीं पे, या फिर यू मस्ट नो दिस थिंग दैट इफ़ यू आर सपोज टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कंप्रेशन ऑन अ पर्टिकुलर जॉइंट, देर आर टू थिंग्स दैट यू मस्ट टॉक अबाउट. फर्स्ट थिंग इज द अमाउंट ऑफ वेट दैट इज बीइंग पुट ऑन दिस पर्टिकुलर जॉइंट. लेट्स से अगर ये पर्सन अभी के टाइम पे दिस पर्सन इज इन यूनिलैटरल स्टांस ऑन द राइट लेग, or we can say this person is in that phase of gait where the right leg is in the stance phase and the left leg is in swing phase, है ना. that can also be compared to the unilateral stance, ना. तो वो भी तो unilateral stance ऐसा ही हो गया जहाँ पे person का right leg जो है that is in the stance phase and the left leg is in the swing phase. It means, तो अगर हमें if we have to calculate the amount of weight, first of all the amount of weight that is being put on this hip joint, हम यहाँ पे क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं? द वेट ऑफ द हेड, है ना, वेट ऑफ द ट्रंक, वेट ऑफ द आर्म्स, एंड वेट ऑफ दिस लिफ्टेड लेग ऑल्सो, ना. ये लिफ्टेड लेग का भी वेट इवेंचुअली इट इज़ गोइंग टुवर्ड्स दिस हिप जॉइंट, ना. सबको ये समझ आया? यस सर. है ना. तभी बुक में अगर आप बायोमैकेनिक्स में देखोगे, वहाँ पे लिखा हुआ है HATLL, दैट इज़ हेड, आर्म, ट्रंक एंड लिफ्टेड लेग. दैट इज़ हेड, आर्म्स, ट्रंक एंड द लिफ्टेड लेग. The combined weight of all these structures will pass through this particular hip joint. Plus, right now we are supposed to calculate the amount of compression on this hip joint, ना. तो I told you that अगर compression हमें calculate करना है, for that the first thing that we should know is the amount of weight that is being put on this hip joint, plus the force of contraction of the muscle which is in close, you can say vicinity with that particular joint, ना. तो इसके close vicinity में ये वाली muscle present है. तो the contraction of this particular muscle, the force of contraction will again, it will also transmit towards this hip joint, ना. So it means if we are supposed to calculate the amount of compression on this hip joint, we have to talk about two things: the amount of weight of the body that is being put on this hip joint, plus the force of contraction of this particular muscle also. ठीक है. I think ये चीज़ इसमें किसी को डाउट है कि वेट भी फोर्स है? अगर मैं बोलूँ कि इस पर्सन का वेट लेट्स से 70 kg है, या फिर मैं बोलूँ कि इस पर्सन का वेट लेट्स से जो भी 50 न्यूटन्स है, तो कोई कंफ्यूजन तो नहीं? बिकॉज वेट इज़ ऑल्सो फोर्स, ना. वेट आता कैसे है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, जितने फोर्स से ग्रेविटी हमें खींच रही है ग्राउंड की तरफ, वही तो हमारा वेट है. तभी हमारा वेट कम हो जाता है व्हेन वी गो ऑन लेट्स से इन द आउटर स्पेस, या फिर हम कहीं और जाते हैं. बट इफ़ आई टॉक अबाउट मास, क्या मास चेंज होता है? Should the mass get altered?
मास नहीं चेंज होगा ना. मास simply means the amount of, you can say, the amount of molecules which are present. मतलब definition is like goes like this only, that the amount of molecules which are present in a particular person, that is called as the person's mass. But if you talk about weight, weight is the force. The force can alter if the person might, if the person goes into different you can say the different places where there is different level of gravitational force ना. Okay, so that is the force. तो एंड मास दूसरी चीज़ है. मास हमारा ऑल्टर नहीं होगा, डजेंट मैटर कि हम कहीं भी चले जाएं. ठीक है. ओके, तो इट मीन्स कि इफ आई से दैट द अमाउंट ऑफ फोर्स, let's say 70 newtons of force of the head, arm, trunk and lifted leg, plus let's say 10 or 12 newtons of force of this particular muscle, and the combined force will be the amount of total amount of joint compression that is on this particular hip joint. ठीक है. Now what we can see that the contraction of the latissimus dorsi, it will try to lift the pelvis from this side, है ना. अब pelvis को अगर इस side से lift करेगा, तो in that case we can see that the responsibility of this particular muscle has decreased ना. अब इस this gluteus medius को contract करने की ज़रूरत नहीं है, because the sole contraction of the latissimus dorsi is enough to keep the pelvis in the neutral position. ये सबको समझ आया अब? Yes, sir. ठीक है. And because of that, now this particular muscle doesn't need to contract, and still the pelvis can remain in the neutral position because of the contraction of the latissimus dorsi. That is the reason why we ask a person to use, you can say, a cane or an auxiliary crutch on the side which is contralateral to the painful hip joint. At least we are eliminating the contraction of this muscle so as to decrease the amount of compression on this hip joint, at least to some extent. ठीक है. सबको रीज़न समझ आया? Yes, sir. Okay, so that was a bit of biomechanics of this thing, but इसके ऊपर पूरा mathematical डिडक्शन है. वी विल टॉक अबाउट दैट कि वो कैसे होता है, एंड वहाँ पे एग्जांपल लेके वी विल टॉक अबाउट दिस कि पर्सन का वेट इतना है, वो है ना, उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे. खैर, यहाँ पे हाँ, तो वी हैव टॉक्ड अबाउट द ग्लूटियस मीडियस एंड मोर लेस द सेम फंक्शन इज ऑफ द ग्लूटियस मिनिमस ऑल्सो, एंड ग्लूटियस मीडियस एंड द ग्लूटियस मिनिमस, एंड बोथ सप्लाइड बाय द सुपीरियर. दिस वी नो, एंड ठीक है. And you can say that okay, there is one more thing. If you talk about the muscles closely related to the hip joint, there is this fact that in the neutral position of the hip joint, में the most of the muscles, they are supposed to provide lateral rotation. We will talk about certain muscles यहाँ पे देखेंगे हम, that all the muscles which are present here, they are supposed to provide lateral rotation of the hip joint. That's why we will see, if you try to resist a person's lateral rotation of the hip joint, and then if you try to resist the medial rotation or the internal rotation of the hip joint, you will see कि lateral rotation is much stronger than the medial rotation. The reason for that is we have got a bunch of different muscles which are all supposed to provide lateral rotation of the hip joint, but what we see that with 90 degree of hip joint flexion, अगर hip joint को हम 90 degree flexion में ले आते हैं, in that case we can see that these muscles come into a particular orientation where the movement arm for internal rotation of the hip joint increase. We will talk about this in biomechanics properly, but we can see that you can just remember right now the thing that with 90 degree of hip flexion, hip joint को अगर हम 90 degree flexion में ले आते हैं, in that case the movement arm for of these muscles, or you can say the effort arm for these muscles, increases, and it increases for internal rotation, and that's why we can see that there is more, you can say, stronger internal rotation of the hip joint when the hip joint is in 90 degree of flexion as compared to the hip joint being in 0 degree of flexion, or you can say in neutral position. ठीक है. But the lateral rotation is much stronger because we have got a bunch of different muscles which are solely responsible to provide lateral rotation of the hip joint. Okay, अभी हम इस पे आते हैं, but ठीक है, यहाँ पे we have seen, ठीक है, यहाँ पे हमने देख लिया कि assist in flexion and medial rotation of the hip, and posterior portion, some of the posterior, just like the deltoid, you can say the posterior portion of this muscle provides it might help in providing extension as well as lateral rotation. The anterior fibers might provide internal rotation and flexion action. ठीक है. And more or less we have talked about the major action of the gluteus medius and then the gluteus minimus also. We can see that it might provide depression of the pelvis as well in the case where the leg is in weight bearing position and the insertion of the muscle is on the pelvis, and in that case we can see that it provides depression of the pelvis. Okay, I hope till now we are clear the attachment, the nerve supply and the actions of these muscles. यहाँ तक clear है? Yes, sir. ठीक है.
वो लैटिसमस डॉर्साई वाला कंसेप्ट सबको समझ आया कि नहीं आया? Yes, sir. Excuse me, sir. हाँ. Can we also discuss the movement of pelvis? The movement of pelvis, that pelvic drop and pelvic hiking. हाँ, tilts and all. ओके, देर आर, इसके लिए देखो, देर आर डिफरेंट क्लासेस फॉर दैट. एक क्लास होगी, लाइक आई हैव गिवन everyone just a basic, you can say, glimpse of the Trendelenburg sign and how there is this lateral, you can say, dropping and hiking of the pelvis, but we will talk about that properly. So there is a separate class for this thing in biomechanics. Apart from that, there is a separate class for the transverse movement of pelvis, जहाँ पे we will talk about the anterior, the rotation of the pelvis. पेल्विस का जो रोटेशन भी होता है ना, एक तो होता है कि पेल्विस ड्रॉप एंड पेल्विक हाइक, दैट इज अ डिफरेंट थिंग जो कि हमने अभी बात करी. अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ वी हैव अ लुक एट द पेल्विस फ्रॉम द सुपीरियर व्यू, मतलब अगर हम सुपीरियर व्यू, अगर हम इसको देखते हैं सुपीरियरली, अगर हम देखते हैं बर्ड्स आई व्यू से, तो इन दैट केस वाइल द पर्सन इज वॉकिंग, वी विल सी दैट पेल्विस इन द मूव्स इन द ट्रांसवर्स प्लेन ऑल्सो, है ना, जहाँ पे इसका एक तरह का रोटेशन होता है, दैट इज कॉल्ड एज rotation movement of the pelvis. So that, for that we have got a different class, and apart from that we are also supposed to talk about the anterior and the posterior tilting of the pelvis along with the movement of the lumbar spine. तो उसके ऊपर, इनके ऊपर 3 डिफरेंट क्लासेस हमारी हो गई, तो इसलिए राइट नाउ आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट थिंग. ठीक है, बट वी विल सी कि हाउ द मूवमेंट ऑफ लंबर स्पाइन, हाउ द मूवमेंट ऑफ लंबर स्पाइन विल अफेक्ट द मूवमेंट ऑफ सैक्रम. कि सैक्रम में हमारी मूवमेंट होती है ना, सैक्रल क्या क्या, सैक्रल न्यूटेशन एंड सैक्रल काउंटर न्यूटेशन. ठीक है, वी विल टॉक अबाउट दैट, एंड हाउ द मूवमेंट ऑफ सैक्रम इवेंचुअली चेंजेस द, यू कैन से, alters the movement of the innominate bones. ठीक है, and how we can see कि when the person, तो we will talk about different circumstances कि when the person is in the standing position, when the person is in the supine lying, and when the person is in the prone lying position. So in which case where there will be which type of movement in the lumbar spine, and because of that sacrum पे कैसा movement होगा, and because of that pelvis पे कैसा movement होगा. तो that is a big topic all together, तो इसलिए उसको मैंने अभी अलग से रखा हुआ है. ठीक है, okay, but right now we are Okay. just okay, we are just talked about the basics of the pelvic that thing, the pelvic drop and pelvic hike, but again we will talk about this in detail in biomechanics. Okay, okay, so okay, we are done with this thing, and now the next muscle, that is TFL. My first question will be that the TFL makes the roof of which structure, which anatomical structure? Femoral triangle. Yeah, it makes the roof of the femoral triangle. Na? We have talked about this yesterday, na? That the roof of the femoral triangle is being made by the TFL, and TFL gives this. This we all know. Na? TFL gives this band, na? That is called as, IT band. that is called as IT Yes, band, and yes, IT, okay, and IT band has its insertion on which bone? Tibia. On the tibia. Greatest on Yeah, exactly, Yeah. on the Gerdy's tubercle, this is we talked about the Gerdy's tubercle on the tibia, or we can say on the lateral condyle of the tibia. Okay, okay, and we have got this thing, femoral triangle, which is present here, and the roof of the femoral triangle is being made by the TFL, that is the tensor fascial lata, na? And we can see this is the gluteus maximus. We have talked about the insertion of the gluteus maximus, that is on the gluteal tuberosity of the femur, on the posterior aspect. Here we can see we have got some fascia as well. Okay, so we can see this fascia is a continuation of both these muscles, the gluteus maximus as well as the TFL. Okay, and there is this band that is coming from this fascia only, and that eventually gives rise to the IT band. Okay, so we can see that from the ASIS, attachment on the ASIS to the fascia to the IT band. Also it has its attachment on this particular fascia and on the IT band. It eventually gets inserted into the lateral condyle on the Gerdy's tubercle of the tibia. And now the nerve supply for this is the superior gluteal nerve, just the same nerve that we had for the gluteus minimus and the gluteus medius. Okay, so till now we know that gluteus medius, gluteus minimus, and the TFL, all these three muscles have got the same nerve supply, that is superior gluteal nerve, but the gluteus maximus, which is a major gluteal muscle, that muscle has got the inferior gluteal nerve as its nerve supply. Okay, and okay, but we can see it has got a bunch of different muscle, different actions that
it assists in movement and stabilization of both the hip, ठीक है. It assists in provides in it provides assistance, and it works with the gluteus medius and minimus to internally rotate, ठीक है. And also it provides some sort of abduction as well. So we can say that TFL has not got any specific action. It might work, it works with other muscles and assists other muscles to provide different actions. It might assist the gluteus medius and the gluteus minimus. It might assist the other muscles as well, ठीक है. And it might work with gluteus maximus as well, ठीक है, via it is attached with the gluteus maximus as well, ठीक है. So we can see this muscle might assist in providing hip joint flexion. It might also help in providing hip joint abduction, and also provide stability to this particular part of the hip joint, okay. So that is, you can say, no precise action, but you can say a combination of different actions of the TFL. But majorly it participates to make the roof of the femoral triangle, and the nerve supply for this particular muscle is the superior gluteal nerve, okay. That is the TFL. In the end, इसमें भी हम we have got that one chart in which we will cover all the muscles and the nerve supply, just the way we talked about that in the upper limb. But यहाँ पे in the lower limb, of course, we have got a bunch of more muscles that as compared, मतलब उसमें upper limb में there were much lesser muscles as compared to the lower limb. Also we will talk about the muscles of the sole as well. So today we are not going to talk about that. आज तो हम सिर्फ knee joint तक ही देखेंगे जो muscles present है thigh से, मतलब pelvis से लेके up to the knee joint. We will talk about only those muscles, ठीक है. कल फिर हम उसके नीचे knee joint के नीचे वाली muscles, and then the muscles of the foot and the muscles of the sole, we have to talk about that, है ना. तो in the sole of the foot we have got the muscles in different layers, so we have to talk about that in detail. तो उसको हम कल देखेंगे, but okay, today we are supposed to talk about these muscles, okay. अब यहाँ पे we can see that the complexity increases, but till now I think we are clear. यहाँ तक तो हमें कोई डाउट नहीं है ना. TFL, gluteus minimus, maximus, medius and the maximus, ये चार मसल्स तो हमें क्लियर है, ठीक है. आई थिंक ये चार मसल्स हमें पहले से भी है ना. वी न्यू अबाउट दिस मसल्स बिफोर इट, बट नाउ द थिंग इज, नाउ we can see we have got a bunch. So we can remove this particular one. We'll know that this is gluteus medius, we have talked about this. But here we can see we have got a bunch of different muscles which are present on the posterior aspect of the pelvis, and eventually getting inserted or getting attached somewhere on the femur, okay. So it means all these muscles present on the posterior aspect of the pelvis and getting attached to the femur, all these muscles are supposed to provide lateral rotation, or you can say external rotation of the hip joint, okay. Now we will talk about these muscles in detail. First of all, we can see बाकी सब muscles को let's forget the other muscles. Let's talk about these two muscles, this one and this one. Can anyone tell me what is this part of the bone? इसका नाम क्या है? Ischial spine. Ischial spine, yeah, this is the ischial spine, ठीक है. And this one, this was ischial tuberosity, ना, ठीक है. We have got the pubic, this is the pubic body, this is the superior ramus, this is the inferior ramus, up to this particular part. Then we can say that this is the body of the ischium, that this is the inferior ramus of the ischium, this is the superior ramus of the ischium. And we saw that this particular part of the ischium is called as the ischial tuberosity. This is called as ischial spine, ठीक है. The pubis ends up to this particular point. This is the part of the ischium, okay. So this is the ischial spine. So we can see from the ischial spine, and a bit lower from the ischial spine, we have got two muscles which are eventually getting inserted or getting attached on the greater trochanter of the femur. So both these muscles, this muscle is the gemellus superior, and this one is the gemellus inferior. I think simple है यहाँ तक. Gemellus superior. Just simply remember that the muscle having its attachment on the ischial spine is the gemellus superior, ठीक है. And this muscle a bit lower to that is the gemellus inferior. यहाँ तक कोई डाउट No, sir. नहीं, ठीक है. Okay, now the nerve supply of these muscles is a bit tricky. इसको मैं okay, let's see. First of all, let's talk about these muscles, and then we will jump over to their nerve supply, ठीक है. पहले एक बार let's have a glimpse of these muscles, and let's see कि हर एक मसल का नाम क्या है. Then we will talk about their nerve supply. Okay, so this is the gemellus superior, this is the gemellus inferior. Here we can see this one है ना, ये gemellus inferior की बात की जा रही है. This is the gemellus inferior, ठीक है. A bit lower to the gemellus superior is the gemellus inferior. Okay, can anyone tell me this particular muscle? One of the most commonly talked muscle है, that is piriformis. हाँ, that is piriformis, है ना. Piriformis यहाँ पे कहीं है. Okay, just give me a second. This one है ना.
Piriformis is the only muscle that is again that is all these muscles are getting inserted on the femur, or you can say more or less on the greater trochanter of the femur, but the piriformis is the only muscle which is coming from the sacrum. But the rest of the all the rest of the muscles, they come from the you can say from the innominate bone, you know. Okay, these muscles are coming either from the pubis, or you can say either from the ischium. But only the piriformis is the muscle which is again getting inserted on the greater trochanter, but having its origin from the sacrum. ठीक है. Okay, this is the piriformis. This particular muscle, ये वाला जो thick band of muscle है, this is quadratus femoris. ठीक है. अभी तक हमने अभी again we will revise this muscle, but we can see that this particular muscle, this is the quadratus femoris. यहाँ पे this one, this is the quadratus femoris. Okay, so let's talk about these muscles again. First of all, we have got two set of muscles. One is coming from the ischial spine to the greater trochanter, and the another one that is a bit lower to that. उनके दो नाम क्या थे, कोई बताएगा? Muscle coming, हाँ, gemellus superior and gemellus inferior. Okay, this particular muscle having its attachment on the sacrum, that is piriformis. Yeah, and this thick band of muscle, that is quadratus femoris. Yeah, that is quadratus femoris. ठीक है. I hope till now we are clear with the muscles. Okay, gemellus superior, gemellus inferior, ठीक है, the quadratus femoris and the piriformis. Now there are two more muscles. Can anyone tell me the name of this particular foramen? Obturator This is the obturator foramen. Yeah, exactly. So it means we have got two muscles, obturator externus and obturator internus. Okay, both of these muscles having their insertion on the GT, but origin is from the obturator foramen. How? Obturator externus is on the anterior, or you can say on the ventral aspect of the obturator foramen, and obturator internus is on the posterior aspect of the obturator foramen. Here we can see, हाँ देखो यहाँ पे, here we can see obturator internus नाम क्यों दिया गया? Because that muscle is present internally, या फिर we can say pelvis के अंदर, inside the pelvis. So this is the मतलब you can say the posterior part, or you can say the ventral aspect of the obturator foramen is present inside the pelvis, na? That's why that particular muscle having its attachment, the obturator internus, ये वाली है, the obturator internus is having its attachment on the ventral aspect of the obturator foramen, and that's why it is called as obturator internus, and this particular muscle is present inside the pelvis. I hope सबको ये चीज़ समझ आ रही है कि why it is inside the pelvis. This is the posterior part of pelvis, and this is the anterior part of pelvis, दोनों के बीच में present है. But if we talk about obturator externus, that is present on the ventral aspect, on the anterior aspect of the obturator foramen, and that's why that is called as obturator externus. Clear है यहाँ तक? ठीक है. Obturator externus, obturator internus, gemellus superior inferior, और क्या था? Piriformis and quadratus femoris. Quadratus femoris, ठीक है. Sir, can you repeat about the obturators? Obturator, okay. This is the obturator foramen. On you can say on the outer side of the obturator foramen, or you can say on the ventral part of the right now we are having a look at the posterior part of the pelvis, na? This is the posterior view. So we can say the obturator externus. Why the name externus? Because it is present externally and getting attached on the obturator foramen, है ना? जो हमारा ये particular muscle है, it is present and the obturator internus, it is going all the way internal, in the internal part of the pelvis. मतलब pelvis जो है, pelvis के अंदर insert करके तब जाके it is getting attached on the ventral aspect of the obturator foramen, ना? The obturator internus. But here we can see this particular muscle, the obturator externus, that is present on the ventral aspect of the obturator foramen. ठीक है. ओके, ठीक है. तो कितनी मसल्स हो गई? जेमिलस सुपीरियर इंफीरियर, piriformis, quadratus femoris, and the obturator externus and obturator externus and internus. ठीक है. और कोई बची है? I don't think और कोई बची है मसल. नहीं, बस इतनी मसल है. And these are all the external rotators of the hip joint. ठीक है. All the external rotators of the hip joint. Now let's talk about the nerve supply. Nerve supply थोड़ा सा ध्यान रखना यहाँ पे. एंड इस स्लाइड में एक जगह पे गलती आई वुड सजेस्ट कि आप एक बार ना
एक बार एक कहीं पे नोट कर लो ये चीज़ कि ओके हम उस पर आते हैं, उस गलती पे, एक जगह पे गलती दी हुई है, बट अभी पहले लेट्स टॉक अबाउट जेमिलस सुपीरियर। तो नहीं, लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल द मेजर मसल की बात करते हैं, उसके बाद स्मॉल मसल्स पे विल कम लेटर ऑन। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट ऑब्टुरेटर एक्सटर्नस, इसी में गलती है। ऑब्टुरेटर एक्सटर्नस एंड ऑब्टुरेटर इंटरनस। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्टुरेटर एक्सटर्नस का अगर नर्व सप्लाई की हमें बात करनी है, ठीक है, द नर्व सप्लाई टू फॉर द ऑब्टुरेटर एक्सटर्नस इज दिस वन, posterior division of obturator nerve। जस्ट इसको कहीं आप नोट कर लो, ये चीज़ मुझे चेंज करनी है स्लाइड में, कि posterior division of obturator nerve is the nerve supply for obturator externus, ठीक है, and there is another nerve supply, that is nerve to obturator internus। simple, a nerve to obturator internus is supposed to provide nerve supply to the obturator internus muscle। आई थिंक ये चीज़ इसमें हमें कोई डाउट नहीं है ना। nerve supply for the obturator internus muscle इज द नर्व टू ऑब्टरेटर इंटरनस, इसमें तो कोई इशू नहीं है, ये तो बहुत सिंपल है। एंड दूसरा ऑब्टरेटर मसल, ठीक है, Yes, ऑब्टरेटर मसल दूसरी sir. हमारी कौन सी बची, दैट इज ऑब्टरेटर एक्सटर्नस। उसके लिए सिंपली इट इज़ द ब्रांच ऑफ द ऑब्टरेटर नर्व, सिंपली, ठीक है, दिस वन, ठीक है, posterior डिवीजन ऑफ द ऑब्टरेटर नर्व, posterior डिवीजन ऑफ ऑब्टरेटर नर्व फॉर ऑब्टरेटर एक्सटर्नस, एंड नर्व टू ऑब्टरेटर इंटरनस ऑफ ऑब्वियसली फॉर ऑब्टरेटर इंटरनस मसल, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत होना है, इसमें इसमें गलत मत कर देना, ठीक है, ये इसको नोट डाउन करना, ये चीज़ उल्टा लिख दिया है, ठीक है, ओके। तो वी हैव टॉक्ड अबाउट द नर्व सप्लाई ऑफ ऑपरेटर एक्सटर्नस एंड ऑपरेटर इंटरनस। इंटरनस का सिंपल है नर्व टू ऑपरेटर इंटरनस, एंड एक्सटर्नस का सिंपली दैट इज द पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ द ऑपरेटर Division. नर्व, या ठीक है, ओके। नाउ टॉकिंग अबाउट द जेमिलस, तो जेमिलस में अगर हम बात करें, वी गॉट जेमिलस सुपीरियर, हाँ जेमिलस सुपीरियर एंड जेमिलस इन्फीरियर, ठीक है। तो जेमिलस सुपीरियर, it has also got the nerve supply, that is nerve to obturator internus। it means obturator internus। तो you can write it down like this, that एक जगह पे आप ऐसे लिख लो, अगर if you are noting down something, कि obturator internus and gemellus superior, they both have got same nerve supply, that is nerve to obturator internus, ठीक है। इसको आप इस तरह से कर सकते हो कि दोनों मसल्स का नाम लिख दो एंड जस्ट मेक एन एरो ऑन बोथ द साइड्स, ऐसे करके, ठीक है। लाइक वाइज वी कैन सी कि, तो ओके, तो अभी तक हमने क्या देखा कि ऑब्टुरेटर इंटरनस एंड जेमिलस सुपीरियर, बोथ ऑफ देम हैव गॉट सेम नर्व सप्लाई, दैट इज नर्व टू ऑब्टुरेटर इंटरनस। likewise we can see likewise we can see the this one, the gemellus inferior, it has got the nerve supply, that is nerve to quadratus femoris, and the quadratus femoris, it has also got the nerve supply, that is nerve to quadratus femoris। it means the nerve supply for quadratus femoris and gemellus inferior is the same, ठीक है। तो आई थिंक हमारे पास चार मसल्स हो गई, ठीक है, दो का नर्व सप्लाई सेम है एंड दो का नर्व सप्लाई सेम है। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? No, sir. ठीक है, इसको इसको इस तरह से नोट करोगे तो आई थिंक इट विल बिकम ईजियर फॉर यू टू रिमेंबर द नेम, ठीक है। बस यहाँ तक हमने देख लिया कि वी हैव गॉट अ सेट ऑफ टू मसल्स जिनका नर्व सप्लाई सेम है, अनदर सेट ऑफ टू मसल्स जिनका नर्व सप्लाई सेम है, ठीक है। वी हैव टॉक्ड अबाउट quadratus femoris and gemellus, this one gemellus inferior having same nerve supply, that is nerve to quadratus femoris। likewise we can see the this one, nerve to obturator internus and the gemellus superior, ठीक है, having the gemellus the obturator internus and the gemellus superior having the same nerve supply, that is the nerve to obturator internus, ठीक है। चार मसल्स की हमने बात कर ली, ठीक है, एंड सेट ऑफ टू हैविंग द सेम नर्व सप्लाई, ठीक है, ओके। now I think out of these muscles we have talked about four muscles। we have talked about the obturator externus and internus, we have talked about gemellus superior and gemellus inferior, also we have talked about the quadratus femoris, nerve to quadratus femoris, ठीक है, that we have talked about the quadratus femoris nerve supply as well, that is nerve to quadratus femoris, okay। now कौन सी मसल बची है? we are left with pyriformis, yeah, we are left with the pyriformis, है ना। simply it is the ventral rami of S1, it directly has its nerve supply from the nerve roots of S1 and S2। we will talk about the ventral, कि ventral rami and dorsal rami होता क्या है, we will have I discussed about this thing in the previous class? Sir. मैंने थोड़ी बहुत बात करी है ना कि क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड having Yes. है ना ventral and dorsal horns, and okay and I think I've talked about
the efferent and the afferent nerves. Yes, sir, you spoke. ठीक है, the efferent nerves are the motor nerves and the afferent nerves are the sensory nerves. Efferent nerves are the nerves which are coming from the, which are going out, which are exiting, है ना, efferent effer exit, which exit the exit the that thing, the spinal cord, है ना. And अगर वो exit करेंगे spinal cord, of course they are supposed to innervate some muscle or something, तो इसलिए वो motor nerve होगी. और जो sensory nerve which is coming towards the spinal cord, वो हमारी एफरेंट नर्व होती है. एंड एफरेंट इफरेंट टर्म हम यूज़ करते हैं ओनली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द नर्व रूट्स. आई थिंक सबने नर्व रूट्स की इमेज फोटो वगैरह देखी है, या फिर आपने अपने वो जो डमी ऑफ द होता है वर्टिब्रल कॉलम, उसमें आपने देखा होगा ना. एक तो आपने देखा होगा कि एक तो हमारा पूरा वर्टिब्रल कॉलम होता है, पेल्विस होता है, जो जो डमी हमारे पास जो होता है. एंड उसमें उसमें येलो कलर्ड, मोस्ट कॉमनली आई थिंक येलो कलर्ड कुछ उसमें दिखाया होता है नर्व रूट्स. सबने नोटिस किया है वो? Yes, sir. ठीक है, येलो येलो कलर में नर्व रूट्स दिखाया होता है. एंड आपने एक चीज़ और नोटिस करी होगी कि द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ दैट वर्टिब्रल कॉलम, उसमें आपने देखा होगा दोनों साइड पे रेड कलर में आर्टरीज जा रही होती है. किसने नोटिस किया हो? Yes, sir. किया है? कोई बताएगा उस आर्टरीज का नाम क्या होता है? दोनों साइड से जा रही होती है. एग्जैक्टली, दैट इज द वर्टिब्रल आर्टरी. ठीक है, वर्टिब्रल आर्टरी दोनों साइड पे हमारी. तो इफ़ यू लुक एट इट कीनली यू विल सी दैट बोथ दीज आर्टरी, तो वी हैव गॉट अ पेयर ऑफ वर्टिब्रल आर्टरीज, वन ऑन द राइट साइड and another one on the left side. And we can see that these vertebral arteries, they pass through the transverse processes of the cervical vertebrae, है ना. cervical vertebrae के transverse process से we see that these vertebral arteries pass. So it means we have got certain foramen which is present in the transverse process of these of the cervical vertebrae. It means that you can say this thing, the transverse foramen is a typical feature of cervical vertebrae. ठीक है, cervical vertebral segment की अगर हम बात कर रहे हैं तो इट मीन्स उसका एक टिपिकल फीचर, मतलब कि हमें ऑलमोस्ट सारे के सारे सर्वाइकल वर्टिब्राज में हमें ये ट्रांसवर्स वर्टिब्रल फोरामेन देखने को मिलेगा. ठीक है, ट्रांसवर्स वर्टिब्रल फोरामेन मीन्स ट्रांसवर्स प्रोसेस में देर इज अ फोरामेन. ठीक है, देर इज अ होल प्रेजेंट थ्रू विच वी कैन सी दिस वर्टिब्रल आर्टरीज पास. ठीक है, डू यू वांट कि इसकी इमेज दिखाऊं कि नहीं? देखो ये इस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ. देखो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, है ना. आई होप एवरीवन इज क्लियर विद दिस थिंग नाउ. आई एम टॉकिंग अबाउट दीज टू आर्टरीज. ठीक है, ये दो आर्टरीज पासिंग थ्रू द ट्रांसवर्स, है ना, द फोरामेन प्रेजेंट इन द ट्रांसवर्स प्रोसेस of the cervical vertebrae. But here we can notice this thing, that these arteries are pass through the cervical vertebrae except one vertebra. That is, can anyone tell me एक cervical vertebra के except बाकी सबसे एंटर पास करता है, दैट इज Last लास्ट वन, दैट इज नहीं लास्ट वन, दैट इज C7. you can see that it seven. ठीक है, it enters through 3-6, it enters through C6. ठीक है, this is the C6 cervical vertebra. ठीक है, तो enters through C6, C5, C4, C3, C2 and C1. ठीक है, C1 के भी तो ट्रांसफर प्रोसेस है, it passes. ठीक है, and then eventually both the vertebral arteries, they combine and makes this particular artery. Can anyone name this particular artery? Basilar artery. This is the, yeah, Basilar exactly, artery. this is the basilar artery, है ना. And we will talk about this, that we have got certain branches coming from the basilar artery, that is called as pontine arteries. Of course, अगर नाम pontine arteries, it means that they are supposed to supply the pons region of the, yeah, of the brain. Likewise, we have got three set of arteries, which is, here we can see the posterior सेरी, यहाँ पे गलत लिखा है, दिस शुड बी पोस्टीरियर cerebellar artery. We will see that we have got three arteries which are coming eventually from the basilar artery, जिसको हम सेरिबेलर आर्टरी कहते हैं. तो सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी, पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी, उसके बारे में बाद में बात करेंगे. तो जो कि हमारा सेरिबेलम रीजन को सप्लाई करता है, नॉट द सेरिब्रम बट द सेरिबेलम. ठीक है, एंड ठीक है, इसको हम बाद में देखते हैं. लेकिन यहाँ पे जो हमारा अभी जो फोकस होना चाहिए, दैट शुड बी ऑन दिस थिंग, दैट द ट्रांसवर्स वर्टिब्रा, सॉरी, द ट्रांसवर्स the vertebral artery, it doesn't pass through the transverse foramen of the C7 vertebra. And that is one of the reasons why we say that the C7 vertebra is also an atypical type of cervical vertebra. ठीक है, इसके अलावा there can be another reason, but I think ये सबको समझ आया कि why मतलब it is passing through the C6 but not through the C7, है ना, vertebral artery.
So I can you repeat, please? okay, I said that जो vertebral artery है, it is supposed to pass through the transverse processes of each cervical vertebrae, and of course it means that we have got we have got these transverse foramen on the transverse processes of the cervical vertebrae. It means कि transverse process पे जो foramen present है, that is called as a transverse foramen, that is a typical feature of the cervical vertebrae. बट वी सॉ कि जो वर्टिबल आर्टरी जो है, इट डजेंट पास थ्रू द ट्रांसफर्स प्रोसेस ऑफ C7. देखो C7 से पास नहीं कर रहा, बट C6 से पास करता है. तो इट मीन्स that can be one of the reasons, or we can say that the transverse vertebral foramen is a typical feature of cervical vertebrae. And since we haven't got any transverse foramen in the C7, in the transverse process of C7, that is one of the reasons why we say that C7 is an atypical type of cervical vertebra. ठीक है, Okay, sir. ठीक है. देर कैन बी Yes, अदर sir. रीजन्स एज वेल. कोई मेरे को बताएगा और टिपिकल फीचर्स क्या होते हैं सर्वाइकल वर्टिब्रे के. देर इज दिस थिंग कॉल्ड एज बाइफिड स्पाइनस प्रोसेस. किसी ने सुना है ना बाइफिड, Yes, sir. है ना. बाइफिड स्पाइनस प्रोसेस, अगर मैं यहाँ पे एक बार दिखाता हूँ. बाइफिड मीन्स बाइफिड मतलब दो मुंह है, ठीक है. मतलब हम इसको देखते हैं बाइफिड स्पाइनस प्रोसेस. ओके, तो here we can see कि देखो यहाँ पे सीधे सर्वाइकल वर्टिब्रे ही आएंगे आपके. तो इट मीन्स इन द सर्वाइकल वर्टिब्रे वी कैन सी ऑल द स्पाइनस प्रोसेसेस ऑफ द सर्वाइकल वर्टिब्रे हैव गॉट टू, you can say this type of process that is called as bifid. ठीक है, दो two feet, ठीक है, bifid spinous process. But in the C7 there is no bifid spinous this is the spinous process of C7. ठीक है, this is the spinous process of C6. Still in the C6 we have got the bifid spinous process, but no bifid spinous process in the C7. And that is another reason why we call it as atypical vertebra. ठीक है, देखो यहाँ पे ये है transverse foramen. It means if I say that this is a C7 vertebra, क्या मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? That if I say that this No, sir. हाँ मैं गलत बोल रहा हूँ because है ना, because यहाँ पे bifid spinous process है which is not present in the C7 vertebra. Also there are transverse foramen again which is not present in the C7 vertebra. ठीक है, तो ठीक है, तो इट मीन्स कि ये हमारा C7 तो नहीं होगा, उसके अलावा कुछ हो सकता है बट C7 तो नहीं होगा एटलीस्ट. ठीक है. एंड चलो ठीक है, यहाँ तक हम देख लेते हैं. एंड ओके, तो हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए, बट ठीक है. हाँ, हमने उसकी बात कर ली. ओके, नाउ वी वर टॉकिंग अबाउट वेंट्रल. हाँ ठीक है, तो हमने तो वी सॉ दैट डायरेक्टली फ्रॉम द S1 S2, ठीक है, S1 S2 रीजन ऑफ दिस थिंग द स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है, फ्रॉम द S1 S2 रीजन वी सॉ that these nerve supply they are directly innervating into the piriformis, and that is the nerve supply for the piriformis. ठीक है, I hope we are clear till now with the nerve supply of the कौन से हमने gemellus superior, gemellus inferior, obturator internus externus, quadratus femoris, इनकी हमने nerve supply की बात करी अभी तक. ठीक है, and now we have talked about the nerve supply of the piriformis as well. There is a condition that is called as piriformis syndrome. किसी ने नाम सुना है? Yes, sir. Piriformis Yes, sir. syndrome. Can anyone tell me कि which is the nerve that is getting compressed? Sciatic nerve. That is the sciatic nerve, है ना. Commonly the umbrella term for that is the sciatica. Sciatica term is मतलब commonly you can use the term sciatica where you can see that because of any condition the sciatic nerve is getting compressed or something. Because of that there is this pain that is running all the way down on the posterior part of the leg. So that is the umbrella term for that is sciatica. But we have to talk about precisely about each and every reason for the sciatica. So where we can say that the piriformis syndrome can be one of the reasons why the sciatica can occur. Na? So in this we see that the sciatic nerve it passes just beneath the piriformis muscle. ना piriformis के just नीचे से pass करती है, and we can see because of the you can say the person having sedentary lifestyle and person have using this the pelvis and the hip joint in a certain way, we can see that after some time the nerve gets compressed underneath this particular muscle, and that leads to the nerve supply getting, not the nerve supply,
So you can say the paresthesia, and you can see the tingling sensation or the burning sensation, that those all things can be seen, and that is called as the pyriformis syndrome. ठीक है, there are these typical features that we can talk about. अगर अगर एक nerve compression होता है, तो in that thing we can talk about if a person complains of burning sensation, पैरेस्थीसिया अगर पर्सन कंप्लेन करता है, टिंगलिंग सेंसेशन अगर पर्सन कंप्लेन करता है, या फिर पर्सन कंप्लेन्स ऑफ डिमिनिश्ड या ऑल्टर्ड सेंसेशन इन अ पर्टिकुलर रीजन, then we are supposed to talk about the nerve, है ना. तो we must our focus should be on the nerve. So we can say that there might be some nerve which might be getting compressed or something, है ना. ठीक है. तो दिस इज द पायरिफॉर्मिस मसल. तो आई होप टिल नाउ वी आर क्लियर. पायरिफॉर्मिस में आगे नहीं पर बात करूँ. पायरिफॉर्मिस ऑब्टरेटर इंटरनस एक्सटर्नस क्वाड्रेटस फेमोरिस और कौन सा जेमिनस सुपीरियर एंड इन्फीरियर. ठीक है, एंड देन नर्व सप्लाई. ठीक है, एंड बिफोर दैट वी टॉक्ड अबाउट द टीएफएल, द ग्लूटियल मसल्स, द ग्लूटियस मैक्सिमस, द मीडियस एंड द मिनिमस. ठीक है, आगे बढ़ो. So, can you explain the insertion and origin of obturator externus and internals again? of the obturator externus and internal. Okay, obturator externus and internals, simply उनको नाम क्यों दिया गया है obturator externus and internals? Because we can see कि देखो, अगर अगर हम इस रीजन की बात कर रहे हैं जहाँ पे मेरा ये माउस पॉइंटर है, ठीक है, इज दिस द इंटरनल पार्ट ऑफ द पेल्विस और द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द पेल्विस? ये इंटरनल पार्ट ऑफ द पेल्विस है ना. देखो, मतलब ये पेल्विस, ये अगर ये इसको अगर आप 3D में अगर आप इमेजिन करोगे, तो ये यहाँ पे राइट नाउ वी आर टॉकिंग, ये हमारा एंटीरियर आस्पेक्ट, वेंट्रल आस्पेक्ट ऑफ पेल्विस है. एंड जब मेरा माउस पॉइंटर यहाँ पे है, तभी हमने पोस्टीरियर आस्पेक्ट ऑफ पेल्विस की बात कर रहे हैं. तो पोस्टीरियर एंड एंटीरियर के बीच में ये इनर पार्ट है ना, इंटरनल पार्ट ऑफ द पेल्विस है ना. तो इसलिए हमने इसका नाम दिया है इस पर्टिकुलर मसल का, जो कि इंटरनल पार्ट ऑफ ऑब्टरेटर फोरामेन से अटैच्ड है. तभी हम इसको ऑब्टरेटर फॉर इंटरनस बोल रहे हैं. या सिंपली वी कैन से दैट द मसल हैविंग इट्स अटैचमेंट ऑन द वेंट्रल आस्पेक्ट ऑफ द ऑब्टरेटर फोरामेन, दैट इज द ऑब्टरेटर इंटरनस. एंड लाइकवाइज वी कैन सी द मसल, ये वाला ना, ठीक है. एंड लाइकवाइज वी कैन सी द मसल हैविंग इट्स अटैचमेंट ऑन द वेंट्रल आस्पेक्ट ऑन द एंटीरियर आस्पेक्ट ऑफ द ऑब्टरेटर foramen, that is called as obturator externus. And both of them, all these muscles are eventually getting inserted on the greater trochanter of the femur. ठीक है, इन सब मसल्स का हमें इंसर्शन जीटी पे ही मिलेगा. ठीक है, एक्सेप्ट वी कैन सी द क्वाड्रेटस फेमोरिस यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अ बिट लोअर देन द जीटी, बट स्टिल वी बुक्स में अगर देखोगे तो जीटी लिखा हुआ है, बट वी कैन सी a bit lower than the GT, but more or less we can say that all these muscles are having their attachment on the greater trochanter of the femur only. ठीक है. Okay, sir. ओके, ठीक है. और कोई डाउट किसी को, कोई अटैचमेंट, मसल अटैचमेंट के बारे में कुछ? ठीक है. ओके, एंड इन सब का मेजर एक्शन की जो हमने बात करी, दैट वाज No, sir. ओके. Uh, ठीक है, हाँ, दैट वाज External and extension. ओके, दैट वाज लैटरल रोटेशन ना. लैटरल रोटेशन था हमारा इन सब का फंक्शन. एंड इसके अलावा with 90 degree of knee joint, we saw that there were certain muscles. We will talk about that properly, that is a full you can say full proper biomechanism behind that. But we can see that with 90 degree of knee flexion, we can see that there are certain muscles which are present here, whose movement arm increases for the internal rotation of the hip joint. ठीक है, तो इन दैट केस वी कैन तो ये एक क्वेश्चन आई थिंक मे बी सूरज कुमार में है कि या किसी बुक में ये क्वेश्चन है कि द मूवमेंट आर्म ऑफ द मसल्स प्रेजेंट इन द पेल्विस increases for which type of movement of the hip joint with 90 degree of knee flexion. So it is internal rotation. ठीक है, with 90 degree of knee joint hip joint flexion. ठीक है, but with 0 degree or neutral position of the hip joint, it is always the lateral rotation. So these are all responsible for lateral rotation of the hip joint. Okay, now coming up to the muscles of the thigh. So the first muscle that we are supposed to talk is the sartorius. अच्छा, sartorius का हमने मसल फाइबर्स के बारे में बात करी थी ना. कैन एनीवन टेल मी कि इसका मसल फाइबर ओरिएंटेशन कैसा होता है? parallel. इट इज़ पैरेलल ना, इट इज़ पैरेलल. ठीक है, पैरेलल मसल फाइबर ओरिएंटेशन. इफ आई आस्क यू अबाउट द डॉर्सल इन द पामर इंट्रोशाई, वहाँ पे कैसा था?
The dorsal interossei and the palmar interossei. Dorsal interossei है. Multi-pinnate and Multi-pinnate. Yeah, okay. Dorsal interossei head bipinnate. Dorsal interossei head bipinnate, and ventral the this thing. Palmar interossei, हाँ. Palmar interossei head unipinnate, हाँ. Multi-pinnate. हाँ. No, multipinnate था आपका deltoid में. Deltoid had multipinnate. ठीक है. Deltoid had multipinnate type of fiber orientation, but in case of dorsal interossei it was bipinnate. Bipinnate simply means एक muscle fiber है. In the center we have got a central tendon and दोनों side पे सिर्फ उस muscle के fibers present है. लेकिन multipinnate means we have got various different सेंट्रल टेंडन्स ना, जो कि हमें डेल्टॉइड में देखने को मिलता है. इट मीन्स डेल्टॉइड हैज़ मल्टीपिनेट टाइप ऑफ orientation of the muscle fibers. ठीक है. Okay. Apart from that, we also saw that if we talk about the function of the muscles on the thigh, let it be the ventral side muscles or the dorsal side muscles of the thigh, तो उनका function on the hip joint and on the knee joint was completely opposite है ना. It means that the quads muscles are supposed to provide flexion at the hip joint but extension at the knee at the knee joint na. A flexion at hip and extension at knee. And on the opposite we saw the hams providing extension at the hip and flexion at the knee. But we can see because of the orientation of this particular muscle, okay, we can see that the sartorius it provides flexion at the hip joint as well as flexion at the knee joint. ठीक है. दोनों पे it assists in providing flexion movement. ठीक है. Also this particular muscle it is the longest muscle. This one is this is the longest muscle in the body. ठीक है. Sartorius is the longest muscle in the body. Okay, clear है यहाँ तक. ठीक है. इसके अलावा और क्या फीचर्स है इसके. हाँ, इट इज़ गेट. देखो यहाँ पे इंसर्शन जो है इसके तो हमने कई बार बात कर चुके हैं. द पेस एंड सेरिन रीजन ना. द पेस एंड सेरिन रीजन. एंड कैन एनीवन टेल मी द टू other muscles which are having their insertion? Gracilis and semitendinosus है ना. हाँ, gracilis and semitendinosus. Can anyone tell me semitendinosus हमारा popliteal fossa के कौन सा border बना रहा था? medial border. Superior medial ना. Superior medial border ना. It was being made by the सेमी. ओके, चलो ठीक है. कहीं से कहीं हम पहुँचे, चलो ठीक. लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं इट इज़ हैविंग इट्स अटैचमेंट एट द ASIs एंड देन द डिस्टल अटैचमेंट ऑन दिस थिंग. इट इज़ प्रेजेंट सुपरफिशियली. ठीक है. सुपरफिशियल मसल है. एंड ओके, एंड आई थिंक वी नो much about this particular muscle and provides flexion at the hip as well as the knee joint. Now simply अगर हमें nerve supply की बात करनी है, all the muscles present on the ventral aspect of the thigh, they are all being supplied by the femoral nerve. Simple. ठीक है. Simply if I talk about the muscles on the ventral aspect of the thigh, they are all being supplied by which muscle, which nerve कोई बताएगा? posterior aspect पे कौन सी nerve supply होती है? sciatic nerve. sciatic. ठीक है. on the obturator nerve is on the medial side. ठीक है. all the muscles which are like, you can talk about the adductor muscles. ठीक है. तो adductor muscles या फिर all the muscles present on the medial side of the thigh, they are all being supplied by the obturator nerve. ठीक है. तो obturator apart from that we have talked about the femoral and the sciatic. तो ठीक है. तो अभी right now we are supposed to talk about only the femoral nerve. तो femoral nerve simply it will supply the this particular muscle, that is the sartorius. क्वाड्स वी नो है ना. क्वाड्स का तो हमें नर्व सप्लाई, सॉरी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम अटैचमेंट का तो हमें पता है. इंसर्शन वी नो ना कि इट इज़ गेटिंग इंसर्टेड, इट गोज ओवर द पैटेला एंड गेट्स इंसर्टेड इनटू द दिस पर्टिकुलर पार्ट. इसका नाम क्या होता है, तू बताएगा? कहाँ पे इंसर्शन हो रहा है? Shin of tibia. दैट इज द tibial tuberosity ना, नॉट द शिन. हाँ ठीक है. शिन हमारा ये वाला पार्ट है, शिन ऑफ टिबिया. दिस इज द tibial tuberosity. ठीक है. tibial tuberosity and origin is at the AIIS. ठीक है. ASIS पे it was the sartorius. ठीक है. but anterior inferior iliac spine, just below that we have the origin for the quadriceps femoris. ठीक है. and now here we can see we have got 4 different muscle bulks for the quadriceps. ठीक है. that is the vastus lateralis, the medialis, the intermedialis and the rectus femoris. ठीक है. and ठीक है, ये चीज़ हमें पता है. now we can see that
Okay, let's not talk about much about the functioning. इसको हम proper biomechanism देखेंगे, but we will see that the contraction of the quadricep muscles, it helps in providing stability of the knee joint. ठीक है. We will see कि how the contract, तो इसके बारे में we have to talk about the force vector कि vastus medialis का force vector किस direction में होता है, vastus lateralis का दूसरे direction में होता है, and we will see eventually how the force vector of these two muscle bulk eventually help to increase the amount of stability of the patella. ठीक है. एक ये हमें बात करनी है. This we will talk about this in biomechanics. Also we can see that can anyone tell me there is a particular part of the quadriceps femoris which helps to provide knee joint locking. Knee locking में Emitted. that is that is vastus vastus VMO. medialis. हाँ, vastus medialis है ना, vastus medialis, and Vastus है medialis. ना, या फिर we call it as vastus VMO, vastus medialis oblique, the oblique fibers which are closely present with the knee joint. ठीक है. तो for to understand this also, यहाँ पे you must ask this thing कि चलो ठीक है, हमें ये फैक्ट तो पता चल गया कि vastus medialis प्रोवाइड कर रही है knee joint locking, but how? ये क्वेश्चन, हाउ वाला क्वेश्चन हर चीज़ में आना चाहिए कि क्यों, कैसे कर रही है. ठीक है. तो इसके पीछे ना पूरा अगेन वी विल सी कि नी जॉइंट फ्लेक्शन एक्सटेंशन के साथ में वी विल सी कि सिर्फ नी फ्लेक्शन एक्सटेंशन ही नहीं होता, देर इज़ एक्सियल रोटेशन ऑफ द टीबिया एंड द फीमर एज वेल. ठीक है. तो फीमर विथ वी विल सी कि with knee joint extension there is lateral tibial torsion with respect to stable femur है ना, and because of that we will see कि या फिर हम बोल सकते हैं सॉरी, हम बोल सकते हैं कि फीमर जो है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रोटेट करती है विद रिस्पेक्ट टू स्टेबल टीबिया. इट डिपेंड्स कि पर्सन वेट बेरिंग में है कि नॉन वेट बेरिंग में, एंड देन वी विल टॉक अबाउट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दिस मसल्स, लाइक हाउ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर मसल is locking the knee joint है ना, and how the contraction of the popliteus leads to unlocking of the knee joint. ठीक है. तो फॉर दैट वी शुड नो फर्स्ट द काइनेमेटिक्स ऑफ द नी जॉइंट कि वो फंक्शन कैसे करता है. देन वी विल सी हाउ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दीज मसल्स लीड्स टू द लॉकिंग एंड द अनलॉकिंग ऑफ द नी जॉइंट. बट फॉर नाउ अगर जब तक एनाटमी की बात आ रही है, टिल नाउ वी कैन जस्ट से दैट द वास्टस मीडियलिस provides the locking of the knee joint and the popliteus provides unlocking of the knee joint. ठीक है. इसमें एक चीज़ और है. अगर आपने, आई थिंक इट इज़ रिटन इन BDC में लिखा है कि उसमें लिखा है, डोंट रिमेंबर, बट एक जगह पे लाइन लिखी हुई है दैट इवन दो द popliteus gets paralyzed, still the popliteus muscle जो है that keeps on acting as a knee for like it provides the function of knee joint unlocking. The popliteus muscle still it provides knee joint unlocking even though popliteus muscle अगर पैरालाइज हो जाती है. तो इसके पीछे भी रीज़न है, ये आप सब देख के आना है, ये हम कल डिस्कस करते हैं. सबको समझ आया मैंने क्या बोला कि ठीक है, इवन दो popliteus muscle अगर पैरालाइज स्टेट में होती है. किसी ने पढ़ी है ये लाइन? No, sir. नहीं पढ़ी? No, sir. बुक को रीड करना बहुत ज़रूरी है. मतलब इवन दो चलो ठीक है यहाँ पे हम चीज़ें समझ रहे हैं, लेकिन स्टिल अब आप बुक को एक बार रीड करोगे ना, जस्ट नॉवल की तरह पढ़ लो एक बार कभी भी टाइम पास में ऐसे, तो यू विल जस्ट रिकॉल कि हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस करी थी, एंड उससे कॉन्फिडेंस डेवलप होगा आपका कि हाँ जो बुक में लिखा हुआ है डेट आई नो. एंड ठीक है. तो उसमें जगह मेरे को याद आ रहा है शायद ये चीज़ BDC में लिखी है, आई थिंक पॉपुलेटेड रीजन में या कहीं पे. तो वहाँ पे अगर आप देखोगे तो यू विल सी कि जो आपकी popliteus है, popliteus इवन दो द popliteus गेट्स पैरालाइज्ड, इवन दो वी विल सी कि इट स्टिल प्रोवाइड्स नी जॉइंट अनलॉकिंग. ठीक है. ओके, बट द रीज़न फॉर दैट वी विल टॉक अबाउट दैट टुमारो. ठीक है. इसका रीज़न क्या है वो हम कल बात करेंगे. बस मेरे को याद दिलाना कि इसका रीज़न हमें डिस्कस करना है. ओके. तो वी हैव टॉक्ड अबाउट द quadriceps femoris, वी हैव टॉक्ड अबाउट द sartorius. एक मसल और बची है ऑन द एंटीरियर, or you can say on the ventral aspect of the femur, that is the articular genu. Okay, तो articular genu is a small muscle. यहाँ पे कोई मेरे को बताएगा ऐसी एक हमने छोटी मसल की बात करी थी when we were talking about the muscle on the on upper anconius. Anconius. तो more or less you can say कि homologous कह सकते हैं. मे बी कहीं लिखा नहीं है ऐसा बुक में, लेकिन you can say more or less homologous because a small muscle present in the upper limb, that is anconius. Anconius हमारा क्या प्रोवाइड कर रहा था? Was it present on the ventral side or on the dorsal side of the
It was present on the dorsal side. Dorsal side, Yeah, extensor compartment. yeah, extensor compartment where it was assisting the tricep, है ना, हाँ, tricep को assist कर रहा था, major function नहीं है, but okay, likewise here we can see, but यहाँ पे भी we can see कि of course इतनी छोटी मसल है, it won't provide knee joint extension, but the major function of the articular genu is that when there is a contraction of the ventral side muscles, we see of course the articularis genu also contracts, and because of the contraction of the articularis genu, what it does, it retracts, okay, here we can see कि यहाँ पे देखो, it retracts the suprapatellar bursa. We talked about the bursa, the of like some of the bursa of the knee joint, na, in I think in the yesterday's class कि there is a suprapatellar bursa present here, there is a prepatellar bursa जो कि यहाँ present होता है, infrapatellar bursa जो कि यहाँ of course नाम से हमें समझ आ रहा है infrapatellar bursa, एंड एक और बरसा होता है दैट इज पेस एंड सेरेनस बरसा जो कि हमारा कहाँ प्रेजेंट, इन्फीरियर यहाँ पे प्रेजेंट होता है, इन्फीरियर लैटरल पार्ट ना, यहाँ पे हियर वी हैव गॉट द पेस एंड सेरेनस बरसा, द इंफ्रापटिलर बरसा, प्रीपटिलर बरसा एंड सुप्रापटिलर बरसा. नाउ द थिंग इज कि जब हम नी जॉइंट एक्सटेंशन एंड नी जॉइंट फ्लेक्शन करते हैं, कैन एनीवन टेल मी कि नी विद द नी जॉइंट एक्सटेंशन पटिला का मूवमेंट कहाँ होता है? यू कैन जस्ट इसको आप खुद से अपने अपने, आई होप सबके पास अपना अपना पटिला है, सब अपने अपने पटिला पे एक बार आप पैल्पेट करके देख सकते हो कि विथ नी एक्सटेंशन आपका पटिला कहाँ मूव कर रहा है. इज इट मूविंग सुपीरियरली और इज इट मूविंग सुपीरियरली? ठीक है, आई होप आपका पटिला सुपीरियरली मूव कर रहा है. ठीक है, ओके. तो इट मींस कि व्हेन वी डू नी जॉइंट एक्सटेंशन देयर इज अ सुपीरियर ट्रांसलेशन ऑफ द पटिला. अब अगर सुपीरियर ट्रांसलेशन ऑफ पटिला होगा तो of course we have got the suprapatellar bursa that might get compressed between the, you can say, the posterior surface of the patella and the femur, है ना. So as to, in order to prevent that compression of the suprapatellar bursa, there is this articularis genu that is present. The contraction of this muscle, it you can say it retracts or it pulls the suprapatellar bursa towards itself so that it doesn't get compressed between the patella and the femur. ये इसका सोल फंक्शन है, ठीक है, आर्टिकुलरिस जीन्यू का. ठीक है, आई होप सबको क्लियर है चीज़. Yes, sir. फिर से बताऊँ, क्लियर? नहीं सर. ओके ओके, नहीं मतलब क्लियर है सबको या फिर से बताऊँ? आई थिंक क्लियर है क्लियर है, ठीक है, क्लियर है. एंड ठीक है, तो एक तो हमने इससे हमें एक चीज़ और समझ आई कि पटला मूव सुपीरियरली विथ नी एक्सटेंशन, इट मूव्स इन्फीरियरली विथ नी फ्लेक्शन, है ना. एंड ऑल्सो वी विल सी दिस स्टैटिक क्वाड्स करते ना सब, तब ऊपर आता ना स्टैटिक क्वाड्स करते. क्या कह रहे हो आप? मैं समझा नहीं. स्टैटिक क्वाड्स एक्सरसाइज करते ना तब पटेला ऑटोमेटिकली ऊपर आता ना सर. पटेला ऊपर आता, हाँ, मतलब विथ नी एक्सटेंशन ना, नी एक्सटेंशन के साथ पटेला सुपीरियरली ट्रांसलेट करता है ना, यही बोल रहे हो? स्टैटिक क्वाड्स एक्सरसाइज में, क्वाड्स एक्सरसाइज में पटेला स्टैटिक क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज सर. स्टैटिक क्वाड्स एक्सरसाइज में आप क्या कह रहे हो, पटेला कहाँ मूव करता है? सुपीरियरली सर. हाँ, मतलब इन एनी काइंड ऑफ नी एक्सटेंशन के टाइम पे नी कभी भी एक्सटेंड कर रहा होगा, उस टाइम पे द पटेला इज सपोज टू मूव सुपीरियरली. मैं समझा नहीं आप किस उसमें बोल रहे हो, मतलब स्टैटिक क्वाड्स एक्सरसाइज में आप कह रहे हो पटेला इज मूविंग सुपीरियरली, आप ये कह रहे हो? सर सर मींस सिंपल याद रहने के लिए सर, मींस अभी स्टैटिक क्वाड्स करते हैं ना, स्टैटिक क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज, तब ऑटोमेटिकली वो पटेला ऊपर आते सुपीरियरली मूव होता है ना सर. हाँ, वो हाँ, दैट इज नॉर्मल मूवमेंट ऑफ, मतलब पटेला नॉर्मली सुपीरियरली. अगर पटेला का सुपीरियर ट्रांसलेशन नहीं हो रहा तो इन दैट केस नी का एक्सटेंशन जो है वो हमारा रुक जाएगा. जस्ट द वे वी सी, अगेन ये हम शोल्डर बायोमैकेनिक्स से पढ़ेंगे, बट वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली डिस्कस टॉपिक जो होता है दैट इज स्कैपुलो ह्यूमरल रिदम ना. तो वहाँ पे भी हम देखते हैं कि इवन इफ द स्कैपुला इज नॉट शोइंग इट्स मूवमेंट ना, अगर स्कैपुला doesn't show its proper upward downward rotation, all those things, so in that case of course arm abduction will get hampered ना, even though हमारा GH joint पे कोई issue नहीं है still. Likewise we can see कि अगर हमारा TBO femoral joint पे कोई issue नहीं है still, अगर हमारा patella move नहीं कर रहा तो of course the knee joint extension will also get affected. ठीक है, एक तो ये चीज़ हमारी हो गई. along with that with knee flexion, can anyone tell me कि knee flexion के साथ में, एक तो हम देख रहे हैं कि knee flexion के साथ में the patella moves inferiorly,
ऑल्सो इफ यू टॉक अबाउट द लैटरल मूवमेंट ऑफ द पटेला, लैटरल और मीडियल मूवमेंट ऑफ द पटेला, उस केस में पटेला कहाँ मूव करता होगा नी फ्लेक्शन में? किसी को आइडिया है? विथ नी फ्लेक्शन does the patella moves medially or laterally with knee Medially, flexion? sir. Yeah, it's Laterally. exactly no, medially it moves medially. So more or less you will see ki with knee flexion the movement of the patella is something like this. With knee extension it is present laterally, but with knee flexion it is moving inferiorly and it moves medially. ठीक है? It moves like this. ठीक है? And we will see in knee joint biomechanics that there are again different types of movements of the patella की patella के भी अपना अपने patellar flexion patellar extension होता है, उसके साथ में patellar rotations होते हैं अलग अलग, तो we will discuss that. But ठीक है, but here we can see कि it moves inferiorly with knee flexion and superiorly with knee extension, है ना? And simply the contraction of the articularis genu, it retracts the suprapatellar bursa so that it doesn't gets compressed between the patella and the femur. ठीक है? And simply the nerve supply has to be the femoral nerve simply. ठीक है? Okay, now coming up to the medial side में से देखो, medial side में सारी मसल्स में आप देखोगे मीडियल साइड मसल्स में इट इज बीइंग सप्लाइड बाय द ऑब्टुरेटर नर्व. ठीक है? लाइक द वे वी सॉ द femoral nerve supplying the anterior side. एडक्टर मसल्स में तो वी हैव गॉट 5 सेट ऑफ एडक्टर मसल्स. ठीक है? 3 तो हमारी एडक्टर नाम से ही है ना. कौन कौन सी है? एडक्टर लॉन्गस, Brevis, Magnus, ब्रेविस, Magnus, या Brevis. हाँ, एडक्टर लॉन्गस, एडक्टर मैग्निस एंड एडक्टर ब्रेविस. अपार्ट फ्रॉम दैट 2 मसल्स और हैं. हाँ, Grace, ग्रेसिलिस एंड पेक्टिनियस. Gracilis, हाँ, ग्रेसिलिस एंड द पेक्टिनियस, है ना? एंड पेक्टिनियस का हमने अटैचमेंट की बात करी थी फीमर पे. कहाँ पे था? Pectineal. ऑन द पेक्टिनियल. इट वाज ऑन द पेक्टिनियल लाइन, है ना? पेक्टिनियल लाइन ऑन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द फीमर. उसके अलावा हमने ग्रेसिलिस की बात कर ली, ग्रेसिलिस का इंसर्शन की हमने बात कर ली. कहाँ पे है तो बताएगा? Fifth and पेस्ट एंसरिन रीजन ना. ग्रेसिलिस की हमने बात कर ली. ओके, ठीक है. अब इसके अलावा अगर हम इफ वी टॉक अबाउट ऑल these three muscles, these three adductor muscles, adductor longus, magnus and brevis, इनके नाम के अकॉर्डिंग है. Simply we will see all these 3 muscles are coming from the pubis. Either they come from the superior ramus or they come from the body or the inferior ramus. ठीक है? यहाँ कहीं से आ रहा होगा, but more or less we will see that these adductor muscles they are coming from the pubis, getting attached on the longest की अगर हम बात करें, of course it is, you can say it is the longest of all the adductor muscles. That is adductor longus. ठीक है? That is adductor longus getting attached on the middle one third of the linea aspera of the femur. It means on the posterior aspect we have got the linea aspera. Linea aspera की हमने बात करी है ना? हमने posterior aspect में जो line Yes, है ना, sir. that was linea aspera. तो linea aspera पे it is getting its attachment. Apart from that we can talk about the adductor brevis. That has to be smaller than the adductor longus. Now this one, adductor brevis, present attached on the proximal one third of the linea aspera. And adductor magnus means it is magnified. So it is magnified. Here we can see ये पूरा का पूरा हमारा लीनिया पूरा का पूरा फीमर पे अटैच्ड है. ठीक है? तो अगेन कमिंग फ्रॉम द प्यूबिस एंड गेटिंग अटैच्ड ऑन होल ऑफ द फीमर. ठीक है? दैट इज एडक्टर मैग्नस. तभी नाम दिया हुआ है मैग्नस, एडक्टर लॉन्गस एंड एडक्टर ब्रेविस. ठीक है? नर्व सप्लाई के बारे में बात नहीं कर रहा बिकॉज वी नो इट इज ऑब्टुरेटेड नर्व सिंपली. ठीक है? And apart from that we have got 2 more muscles. The gracilis having its insertion on this thing ना, on the कहाँ पे था? Medial, pes anserin region ना, यहाँ पे लिखा नहीं है. हाँ, and the pes anserin region ना, medial surface of the proximal tibia or the pes anserinus region. And we have got 2 more muscle attachments on the same side, semitendinosus and on the sartorius, ना, sartorius, semitendinosus and the gracilis, ना, 3 muscles having their insertion at the same point. And the last one, that is the pectineus. Pectineus is a small muscle. ठीक है? Getting attached on the pectineal line coming from the superior ramus. ठीक है? Superior ramus of the pubis. I think we are clear with the term ramus ना, superior and inferior pubic ramus. ये ramus हमने term कल discuss किया था, परसों I think, या कल जो भी कल परसों discuss किया था I think, है ना? तो superior and inferior ramus. Can anyone tell me the name of the type of fracture where there is a fracture of both the rami of the pubis? Straddle fracture ना. straddle fracture. हाँ, that was straddle fracture. Okay, that was straddle fracture ना. ठीक है? Okay, we talked about the, okay, तो फिर 5 adductor muscles. कौन कौन सी है? कोई एक बार नाम बताएगा? 5 adductor muscles.
adductor longus, brevis magnus, gracilis. हाँ, and pectineus, Pectineus. ठीक है, all having the obturator nerve. एंड इसमें एक ट्विस्ट है, बट आई विल टॉक अबाउट द ट्विस्ट टुमारो. एक नर्व सप्लाई में ट्विस्ट है. अभी मैं इसको सिंपल रखना चाह रहा हूँ ताकि हमें एटलीस्ट मेजर नर्व सप्लाई समझ आ जाए. उसके बाद हम एक में थोड़ा सा ट्विस्ट देखेंगे, वो कल हम उसके बारे में बात करेंगे एडक्टर मसल्स में, ठीक है. बट राइट नाउ वी कैन सी वी हैव गॉट द सर ऑप्टेट. pectineus is supplied हाँ, by femoral nerve है ना सर? या इट इज़ गॉट, मतलब यहाँ पे वी सी की देयर इज़ अ पर्टिकुलर नर्व जो कि हमारा दोनों मतलब हैमस्ट्रिंग एंड उसमें सप्लाई करता है. नॉट द पेक्टिनियस, एडक्टर कौन सा है, एडक्टर मैग्नस. इट इज़ द एडक्टर मैग्नस. अगर मैं मेरे को अभी कंफर्म नहीं है, आई थिंक इट इज़ द एडक्टर मैग्नस. एडक्टर मैग्नस में इट हैज़ गॉट सम फाइबर्स जो कि हैमस्ट्रिंग ग्रुप ऑफ फाइबर्स होते हैं, लेकिन अभी हम उसकी बात बाद में करते हैं. लेकिन अभी हम सिंपली देख रहे हैं. Simply we can see here that we have got the obturator nerve for the adductor muscles and 5 adductor muscles simply, ठीक है. I think this is clear to everyone ना. And in the end यहाँ तक बस हमें बात करनी है. लास्ट में we have got these muscles on the posterior side of the thigh which are called as hamstring group of muscles ना. And hamstring में कोई बताएगा? ये तो हमें पता है सबको इसके बारे में. कौन कौन से Semitendinosus. सेमिटेंडिनोसस, हाँ, मेम्ब्रेनोसस एंड बाइसेप्स फेमोरिस, ठीक है. द थिंग दैट वी नीड टू रिमेंबर हियर इज कि द इंसर्शन की अगर हम बात कर रहे हैं, फॉर द बाइसेप फेमोरिस इट इज़ हैविंग इट्स इंसर्शन ऑन द हेड ऑफ फिबुला, है ना. इसके बारे में वी टॉक्ड अबाउट दिस, आई थिंक that on the head of fibula there is the insertion of the bicep femoris. Apart from that, we have got the insertion of the semitendinosus and the semimembranosus. Semitendinosus again attachment at the same part na, at the pes and serenus region na, that is the semitendinosus, and semimembranosus a bit proximal to that. We can say that it is getting its attachment on the medial condyle of the tibia, ठीक है. medial condyle of tibia पे there is the insertion of the semimembranosus and a bit distal to this, कौन सा यहाँ पे होगा, ठीक है. थोड़ा सा मतलब देखो यहाँ पे वी कैन सी दिस इज द अटैचमेंट ऑफ द सेमीमेम्ब्रेनोसस, a bit lower to this, a bit distal to this. We have got the pes and serenus region and where we can see the attachment of the semitendinosus. इसका नाम semitendinosus क्यों है? बिकॉज इट हैज़ गॉट अ बिग टेंडन, मसल टेंडन जो कि प्रेजेंट है, ठीक है. semitendinosus and semimembranosus, ठीक है. and of course the insertion of this thing on the of the bicep femoris on the head of fibula, and both have all these muscles are having their origin more or less you can say from the ischial tuberosity, ठीक है. तो from the ischial tuberosity and going all the way up to different insertions these muscles have got, ठीक है. okay, here we can see in the bicep femoris, just हमने जैसे bicep brachia की बात करी थी, likewise we can see here in the bicep femoris long head of the bicep femoris is coming from the ischial tuberosity, but there is, अगर यहाँ पे दिखाया नहीं है इस इमेज में, but if we remove the long head we will see there is another head of the bicep femoris getting attached on the femur, ठीक है. on the linea aspera of the femur we will see another head that is called as the short head of the bicep femoris, ठीक है. I hope so कोई चीज़ clear है. if we remove this part है ना, this Yes, sir. ठीक है, this superficial part of the bicep femoris, we will see another head of the bicep femoris that is attached on the linea aspera of the femur, ठीक है. the long head and the short head of the bicep femoris inserting into the head of fibula. Okay, and ठीक है, यहाँ तक हमारा all these okay. यहाँ पे the thing is हमने कल popliteal fossa में we talked about the nerve and we talked about a particular nerve that we saw that the sciatic nerve was getting it was bifurcating into the tibial common tibial nerve and the common peroneal nerve ना, common fibular nerve and the tibial nerve, ये इसी दो में जा रही थी, है ना. and we can see that all these muscles are being supplied by the tibial branch of sciatic nerve except the short head of bicep femoris. शॉर्ट, जैसे मैंने कल बताया था कि कहीं पे भी अगर आपको टर्म आता है पेरोनियल, ठीक है, यू हैव टू टॉक अबाउट द मसल्स विच आर और यू कैन सी द स्ट्रक्चर्स विच आर प्रेजेंट ऑन द लैटरल आस्पेक्ट ऑफ द थाई एंड द लोअर लेग, ठीक है. लेग में हम बात करेंगे वहाँ पे काफ़ी कॉमनली नाम आएगा पेरोनियल, बट व्हेन वी टॉक अबाउट द थाई only in the one part of the muscle you can say we can talk about the peroneal region. You can say that the short head of the bicep, it is having the nerve supply that is its nerve supply is from the common peroneal nerve of the sciatic nerve, ठीक है. you will hear this peroneal term only for once in the
in the posterior aspect of the thigh muscles, and that too in the short head of the bicep femoris. ठीक है, bicep femoris के short head में we have got the common peroneal nerve, that is the nerve supply. But apart from that, all these muscles of the posterior aspect have their nerve supply from the tibial part of the sciatic nerve. ठीक है, ओके, ये भी चीज़ हमारी क्लियर हो गई. एंड ठीक है, वी आर डन विद टूडेज मसल. एंड अब कैन देयर बी एक्टिव एंड पैसिव इनसफिशिएंसी? कैन वी टॉक अबाउट दिस इन द लोअर लिम्ब मसल्स? क्या हम इसके बारे में बात कर सकते हैं? इफ इट है ना, कर सकते हैं ना. इफ अगर अगर हम लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ द हैमस्ट्रिंग मसल्स ओनली. तो क्या एग्जांपल हम ले सकते हैं कि मतलब इफ Stroke patient. हाँ हाँ, Stroke patient with weak hamstring muscles. stroke patient with weak hand. No. When we talk about insufficiency, in the case of insufficiency, we are not supposed to talk about the muscle getting paralyzed. ठीक है, insufficiency जो है, ठीक है, इन मसल insufficiency जो होती है, muscle insufficiency is a normal you can say function of a muscle. ठीक है, normal functioning है एक muscle की, muscle insufficiency. ठीक है, it is a normal thing. तो मसल इनसफिशिएंसी के बारे में हम कब बात मतलब लेट्स से व्हेन द पर्सन इज इन सुपाइन लाइंग पोजीशन, ठीक है, एंड वी आस्क द पर्सन टू डू स्ट्रेट लेग रेज. तो इन दैट केस द पर्सन इज नॉट एबल टू कंप्लीट द हिप जॉइंट फ्लेक्शन. तो इन दैट केस वी कैन टॉक अबाउट विच टाइप ऑफ insufficiency of the hamstring. Is it the active insufficiency or the passive insufficiency? Active. No, it is supposed to be the passive ना, passive. देखो इस केस में जहाँ पे हिप लेग को हम स्ट्रेट लेग रेस कर रहे हैं, तो वहाँ पे हैमस्ट्रिंग जो है, इज इट गोइंग इनटू अ स्ट्रेच पोजीशन या फिर कॉन्ट्रैक्शन में जा रही है? स्ट्रेचिंग में जा रही है. तो इट मीन्स कि जहाँ पे कोई मसल अगर स्ट्रेच में जा रही होती है, तो वहाँ पे वी हैव टू टॉक अबाउट पैसिव इनसफिशिएंसी. ठीक है, इसका सिंपल एग्जांपल हमने लिया था ना, जो हैंड की जो मसल्स थी. ठीक है, तो फ्लेक्सर कंपार्टमेंट मसल्स अगर वो पहले से ही हमारी रिस्ट पे कॉन्ट्रैक्टेड है, एंड उसके बाद इफ यू ट्राई टू कॉन्ट्रैक्ट इट एट द इन द फिंगर्स आल्सो, तो इन दैट केस दैट इज कॉल्ड एज एक्टिव इनसफिशिएंसी, वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल, है ना. हाँ, एंड उसका अपोजिट एक्सटेंसर, सेम हम रिस्ट एंड फिंगर फ्लेक्शन कर रहे हैं, बट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्सटेंसर कंपार्टमेंट मसल्स. नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट द स्ट्रेचिंग ऑफ दोस मसल्स ना. तो अगर स्ट्रेच नहीं हो पा रहे सफिशिएंटली, तो दैट इज अगर प्रॉक्सिमली हमने रिस्ट पे ही अगर हमने सफिशिएंटली स्ट्रेच कर दिया इन मसल्स को, एक्सटेंसर कंपार्टमेंट मसल्स को, एंड नाउ दे आर इनसफिशिएंट टू स्ट्रेच at the fingers, तो in that case that we will call it as passive insufficiency. Likewise यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि मतलब इसका जो फंक्शन था, मतलब हैमस्ट्रिंग का जो फंक्शन था, दैट वाज एक्सटेंशन एट द हिप जॉइंट एंड फ्लेक्शन एट द नी जॉइंट. बट हम कर क्या रहे हैं? वी आर डूइंग फ्लेक्शन एट द हिप जॉइंट एंड एक्सटेंशन एट द नी जॉइंट ना, ड्यूरिंग स्ट्रेट लेग रेस. तो इन दैट केस वी आर स्ट्रेचिंग द लिमिट्स ऑफ द हैमस्ट्रिंग. तो वो मान लो आपका नी जॉइंट पे पहले से ही वो एक्सटेंडेड है, ऊपर से हम हिप जॉइंट पे भी अब नाउ वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग इट इनटू फ्लेक्शन पोजीशन. तो उसमें तो ऑफ कोर्स हमारी हैमस्ट्रिंग जो है दैट विल बिकम इनसफिशिएंट टू लेंथन, है ना, एंड दैट इज कॉल्ड एज पैसिव इनसफिशिएंसी ऑफ द हैमस्ट्रिंग मसल्स. Likewise, we can say in the same action we can say that there will be active insufficiency of the quadricep muscles, na? हाँ, because now since we have kept the knee joint in extended position, now we are trying to bring the hip joint also into flexion. तो quadriceps दोनों एक्शन तो प्रोवाइड नहीं कर पाएगा ना साइमल्टेनियसली. इट कैन आइदर प्रोवाइड एफिशिएंटली हिप जॉइंट फ्लेक्शन और एफिशिएंटली नी जॉइंट एक्सटेंशन. नाउ वी आर स्ट्रेचिंग द लिमिट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर मसल, बट वो नहीं कर पा रहा. तो दैट्स वाई वी सी दैट दिस मसल बिकम्स द क्वाड्स मसल बिकम्स insufficient to provide hip flexion and knee extension simultaneously, and that's why we call it as active insufficiency. ठीक है, okay, I hope we are clear with this thing. ठीक है, तो tomorrow we will cover all this thing, जो remaining muscles है of the leg, the anterior, lateral and the posterior aspect. इसमें हमने more or less we have talked about the soleus and the gastrocnemius and the plantaris, उसके बारे में भी हम बात करेंगे. And then the muscles of the foot, that is important. ठीक है, तो थोड़ा बहुत वहाँ पे, and then we are done with the muscles of the lower limb. ठीक है, okay, तो let me now wind it up. ठीक है, thank you. Thank you, sir. Okay, Yes, sir. Thank you, sir. okay, thank you.